Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare हरे कृष्ण प्रभु जी तरफ प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु, आई वाज तो मैं आपका क्विज कर रहा था। सो हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज। सो वेलकम टू आवर रीस्टार्टिंग ऑफ भागवतम क्लास। सो यही कलयुग की स्थिति है कि कोई चीज हम अध्यात्म भी शुरू करते हैं और उसमें से जरा सा भी कुछ स्लिप होता है तो स्लिप होता चला जाता है। सो वी आर सॉरी फॉर दैट और विल ट्राई कि अब वो उस तरह का रुकाव बीच में ना आए। सो विल बिगिन द क्लास नाउ। ओह अच्छा, क्विज। ओके, सो how many of us are there? 15 of us are there as usual. Atul Prabhu is first, then Anshri Mataji. Cha Vedansh bhi hai. Okay, number 3. Okay, then Anshri Mataji, then Pinky Mataji, then myself, then Vijay Mataji, then Vrindavan Purandar Prabhu, Asim Goput Prabhu, then Jeet Mataji is about to complete. Okay. Okay, so how many people have devotees have attempted it? 10. 15 में से 10. Okay. So तो जो 4-5 डिवोटीज रह गए हैं, है ना, प्लीज
ट्राई टू अटेंड द क्विज। हाँ, भक्तों ने इतनी मेहनत से आपके लिए बनाई है, और मुझे लग रहा था आज क्विज नहीं हो कुछ भूल भी गया था कि इतने गैप के बाद, बट इज वेरी गुड। और वो अतुल प्रभु ने अपनी फर्स्ट पोजीशन बना के रखी हुई है। वंडरफुल। सो विल बिगिन क्लास नाउ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। और ओके, सो अभी हम लोग पहले कैंटो के स्कंद के 13वें अध्याय के अंत में पहुंचे हुए हैं। हाँ, दिस चैप्टर इज धृतराष्ट्र लीव्स, इट्स लाइक दिस। धृतराष्ट्र he leaves, I think, yes, धृतराष्ट्र quits home, this is the name. So हमने पढ़ा अभी तक किस तरह से जो धृतराष्ट्र हैं वो घर छोड़ते हैं, और किस तरह से उनके साथ जो है जो उनके जाने के बाद जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, दुख की स्थिति में आते हैं। कि किस तरह से कि विदुर भी चले गए और गांधारी भी चली गई उनके साथ। और वो अलग अलग चीजें याद करते हैं, और उनका अपने प्रति और बचपन में कैसे उन्होंने प्रेम से उनको पाला पोसा, वो सब याद करते हैं। और वो उसी दशा के अंदर उनको जो है नारद जी उनको समझाते हैं। और सो अब उसके बाद संजय और नारद दोनों उनको समझाते हैं, और उसके बाद नारद जी जो हैं वो ज्ञान देते हैं उनको कि किस तरह से काल ही सब कुछ है, और ये जो शरीर है ये मिट जाएगा। तो इस तरह से उनको सारा बताते हैं, उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। और उनको बताते हैं किस तरह से वो इस जंगल में गए हैं हिमालय पर्वत के, और वो वहाँ पर जहाँ पर गंगा जो है वो 7 भागों में विभाजित है। मुझे ये प्रश्न भी पूछा था और मुझे आंसर तो नहीं पता था तब, पर मुझे ये पता था, पता नहीं कि 5 में कहाँ विभाग होती है, तुक्का लग गया मेरा। 7 जगह पे विभाजित होती है। और उसके बाद जो है कि किस तरह से बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वहाँ पर वो अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, और अग्निहोत्र करके यज्ञ में आहुति देते हैं, और केवल पानी पी रहे हैं, और अपना मन अपना इंद्रियां उन्होंने सब जो है वो काबू की हुई है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था, उसके आगे जो है वो आज हम पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज 1:13:54। और आप लोग में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड सो वी कैन रीड टर्न बाय टी। जीतास्नो जीत श्वासा प्रत्यहिता सद षड इंद्रिया हरि भाव नया द्विष्टा रजा सत्वो तमो मलहा
Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One who has controlled the sitting posture, the yogic asanas, and the breathing process can turn the senses towards the absolute personality of Godhead and thus become immune to the contaminations of the mode of material nature, namely mundane goodness, passion, and ignorance. तो ये अष्टांग योग का फायदा रहता है कि आप जो है एक जगह बैठ के अपना मन और इंद्रियां काबू में कर सकते हैं और उसको भगवान की तरफ लगा सकते हैं। और इस तरह करने से जो एक योगी है वो तीन जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उनसे ऊपर उठ जाता है। दैट इज अ पर्पस ऑफ अष्टांग योग की समाधि के अंदर नॉन स्टॉप वन कैन हैव स्मृति एंड मन स्थित ऑन द लोटस फीट ऑफ परमात्मा और कृष्णा और लॉर्ड विष्णु। Purport: The preliminary activities of the way of yoga are asana, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, etc. Maharaj Dhritarashtra was to attain success in those preliminary actions because he was seated in a sanctified place and was concentrated upon one objective, namely the Supreme Personality of Godhead, Hari. Thus, all his senses were being engaged in the service of the Lord. This process directly helps the devotee to get freedom from the contaminations of three material modes of nature. Even the highest mode, the material mode of goodness, is also a cause of material bondage. And what to speak of other qualities, namely passion and ignorance. Passion and ignorance increase the material propensities of hankering for material enjoyment, and a strong sense of lust provokes the accumulation of wealth and power. तो अगर हमारे अंदर हमें दिखता है कि अगर हमारे अंदर मटेरियल चीज़ों को इंजॉय करने की प्रोपेंसिटी बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है? पैशन एंड इग्नोरेंस, तमोगुण और रजोगुण। एंड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लस्ट प्रोवोक्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। तो अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं बहुत सारा धन, ताकत, बड़ा ओहदा, तो वन शुड नो कि वन इज इन द मूड ऑफ Tamogun and Rajogun. One who has conquered these two base mentalities and has raised himself to the platform of goodness, which is full of knowledge and morality, cannot control the senses, namely the eyes, the tongue, the nose, the ear, and touch. But one, तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने रजोगुण तमोगुण से ऊपर भी आ गया, सतोगुण में भी आ गया, और अपने आप को ज्ञान और नैतिकता में भी स्थित कर लिया, बट ही कैन नॉट कंट्रोल सेंसेस। जैसे हम विश्वामित्र के एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये सब करने के बावजूद जो है इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता। बट वन हु हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हरि, एज अबव मेंशन्ड, कैन ट्रांसेंड ऑल इन्फ्लुएंसेस of modes of material nature and be fixed in the service of the Lord. The Bhakti Yoga process, therefore, directly applies the senses to the loving service of the Lord. This prohibits the performer from engaging in material activities. This process of turning the senses from material attachment to loving transcendental service of the Lord is called pratyahar, and the very process is called pranayam, ultimately ending in samadhi or absorption in pleasing the Supreme Personality of Hari by all means. So जो भी एक अष्टांग योगी प्राप्त करता है, जो भक्ति योगी है, वो भी सेम स्थान प्राप्त करता है, पर बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। उसको इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, उसको किसी जंगल में या ऐसे दूर नहीं जाना पड़ता। यही भक्ति योग की आसान पद्धति की परिकाष्ठा है कि आसानी से कि जो एक अष्टांग योगी इतने कष्ट से सारा कुछ प्राप्त करता है, उसको घर बार छोड़ना पड़ता है। उनको ये नहीं बोला विदुर ने कि आप यहीं बैठ के आसन लगाइए, महल में है, आपका महल में गार्डन है, आप गार्डन में बैठिए महाराज और यहाँ पर आसन लगाइए। ऐसा तो नहीं बोला कि यहीं प्राणायाम करेंगे, यहीं आसन करेंगे, यहीं प्राणायाम, यहीं धारणा, यहीं ध्यान लग जाएगा, क्योंकि वो तो राजा है
और उनके पास अच्छी अच्छी तरह के गार्डन है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। पर अष्टांग योग का मतलब होता है कि आपको सिटी या घर से दूर जाना पड़ता है। वन कैनॉट डू अष्टांग योग in a household atmosphere. It is not possible like this. Okay, so we come to the next shloka. Yes, Ronnie Prabhu, you want to read? Go ahead. विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रे अग्गे प्रविलाप्यतं ब्राह्मणी आत्मनान् आधरे घतांबरम इवांबरे. Dhritarashtra will have to amalgamate his pure identity with intelligence and then merge into the Supreme Being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity with the Supreme Brahman. Being freed from the blogged sky, he will have to rise to the spiritual sky. The living being, by his desiring to lord it over the material world and declining to cooperate with the Supreme Lord, contacts the sum total of the material world, namely the Mahat Tattva. And from the Mahat Tattva, his false identity with the material world, intelligence, mind, and sense is developed. This covers his pure spiritual identity. By the yogic process, when his pure identity is realized in self-realization, one has to revert to the original position by amalgamating the 5 gross elements and the subtle elements, mind, intelligence, into the Mahat Tattva again. Thus, getting freed from the clutches of the Mahat Tattva, he has to merge in the existence of the Super Soul. In other words, he has to realize that qualitatively he is non-different from the Super Soul, and thus he transcends the material sky by his pure identical intelligence, and thus become engaged in the transcendental loving service of the Lord. This is the highest perfectional development of spiritual identity, which was attained by Dhritarashtra by the grace of Vidur and the Lord. The Lord's mercy was bestowed upon him by personal contact with Vidur, and when he was actually practicing the instructions of Vidur, the Lord helped him to attain the highest perfectional stage. A pure devotee of the Lord does not live on any planet of the material sky, nor does he feel any contact with material elements. His so-called material body does not exist. His being surcharged with the spiritual current of the Lord's identical interest, and thus he is permanently freed from all contaminations of the sum total of the Mahat Tattva. He is always in the spiritual sky, which he attains by being transcendental to the sevenfold material coverings by the effect of his devotional service. The conditioned souls are within the coverings, whereas the liberated soul is far beyond the cover. तो जैसे इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है कि द लॉर्ड्स मर्सी वाज bestowed upon him by his personal contact with Vidur, and when he was actually practicing the instructions of Vidur, the Lord helped him to attain the highest perfection. So it is very important to understand this part कि भगवान, अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, then Lord help ourselves. इसीलिए भक्ति में बढ़ने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर की, शिक्षा गुरु की, दीक्षा गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम प्रणिपात नहीं करते हैं, परिप्रश्न नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है। और जैसे ही हम ये कार्य करना शुरू करते हैं, तो जैसे लिखा है कि एंड व्हेन ही वाज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ विदुर, द लॉर्ड हेल्प्ड हिम टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज। कि जो ऋषि मुनि हजार हजार साल या 100 साल तक खड़े रहते हैं, कार्य करते हैं, वो केवल एक शुद्ध भक्त की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से वो कृपा भगवान ने उनके ऊपर कर दी। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योग में और वो साथ साथ भक्ति योग का कंपैरिजन भी करते जा रहे हैं कि किस तरह से एक तक लेके जाता है, आपको ये बताता है कि परमात्मा कौन है,
और उनकी पर्सनल फॉर्म के सेवा में लगाता है। लाइक दिस। तो दोनों में, हाँ, दोनों ही एक तरफ जा रहे हैं, पर एक जो है वो सीढ़ी से चढ़ना है और दूसरा लिफ्ट से, जिसे प्रभुपाद बताते हैं, उससे ऊपर जाना है। ओके, नेक्स्ट प्रभु, who wants to read? पिंकी माता जी, वेदांश, ओके, गो अहेड। प्रभु जी कैन आई रीड? हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी कैन आई रीड? कैन यू रीड इट? ऑफ कोर्स यू कैन रीड इट। वास्त माया गुणोद्धार को निरुद्ध करनाशया निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थानुरिवाचल तस्यांतरायो मैवाभु सनास्ताखिल कर्मणा। Translation: He will have to suspend all the actions of the senses, even from the outside, and will have to be impervious to interactions of the senses which are influenced by all the modes of material nature. After renouncing all material duties, he must become immovably established beyond all sources of hindrances on the path. Purpose: Dhritarashtra had attained by the yogic process the stage of negation of all sorts of material reaction. The effects of the material modes of nature draw the victim to infertible desires of enjoying matter, but one can escape such a false enjoyment by the yogic process. Every sense is always busy in searching for its food, and thus the conditioned soul is assaulted from all sides and has no chance to become steady and in any pursuit. Maharaj Yudhishthira was advised by Narad not to disturb his uncle by attempting to bring him back home. He was now beyond the attraction of anything material. The material modes of nature, the gunas, have their different modes of activity, but above the material modes of nature is a spiritual mode, which is absolute nirguna, means without reaction. The spiritual mode and its effect are identical. Therefore, the spiritual quality is distinguished from its material counterpart by the word nirguna. After complete suspension of the material modes of nature, one is admitted to the spiritual sphere, and action dictated by the spiritual modes is called devotional service or bhakti. Bhakti is therefore nirguna, attained by direct contact with the absolute. वंडरफुल, कितना सुंदर आपने श्लोक पढ़ा वेदांश, वेरी नाइस। और आपने ये भी पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश के, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं किस तरह से कि निर्गुण का मतलब है कि जब कोई भी मटेरियल मोड का कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, और जो जब इंद्रियां अपनी सही उसमें आती हैं स्पिरिचुअल सेंसेस के अंदर, हाँ, तब हम जो भी कार्य करते हैं वो सब निर्गुण है, सारा का सारा। और इसीलिए जो भक्ति है उसको निर्गुण बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके भक्ति हो रही है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। अहम तो हम स्वरूप पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये आचार्य बताते हैं कि ना केवल भगवान पाप ले लेते हैं बल्कि पुण्य भी ले लेते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके जो कार्य हैं वो केवल भक्ति से गुणित होते हैं, उनमें मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर नहीं होते। ओके प्रभु, नेक्स्ट वन, हु वांट्स टू रीड?
Vrindavan. Yes, Vrindavan Purandar Prabhu, please go ahead. Hare Krishna Chaitanya Pranam. Sava Adyat Nadarajan Parata Panchme Hani Kalevaram Asyati Swam Tach Bhashmi Bhavishyati. Translation: O king, he will quit his body most probably on the 5th day from today, and his body will burn to ashes. Purport. Narad Muni's prophecy prohibited Yudhishthira Maharaj from going to the place where his uncle was staying, because even after quitting the body by his own mystic power, the task would not be in need of any funeral ceremony. Narad Muni indicated that his body by itself would burn to ashes. The perfection of the yoga system is attained by such mystic power. The yogi is able to quit his body by his own choice of time and can attain any planet he desires by turning the present body into ashes by self-made fire. Next Prabhu. So, नारद जी वो पहले से ही उस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि कल को युधिष्ठिर कहेंगे ठीक है, मुझे पता चल गया कि वो वहां चलते हैं, वो इस जगह के ऊपर है हिमालय में, तो मैं वहां जाके उनको ले आता हूँ, है ना। तो वो बता रहे हैं कि वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाँ, आज से 5वें दिन वो शरीर त्याग देंगे। और ऐसा भी नहीं कि उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अष्टांग योग से शरीर में फायर उत्पन्न करके अपना शरीर नाश करेंगे। तो इस तरह से जब कोई योगी शरीर छोड़ता है तो अंतिम संस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, और लेट्स गो अहेड प्रभु। और आई थिंक वी आर इन द लास्ट वर्सेस एंड महाराज युधिष्ठिर में थिंक कि व्हाट अबाउट गांधारी, है ना, व्हाट अबाउट विदुर, मैं उन्हीं को ले आता हूँ। तो अब उसके आंसर अब यहाँ दे रहे हैं। यस प्रभु, गो अहेड। धायमाने ग्निभिर्देहे पत्यु पत्नी सहोतजे बहि स्थिता पतिं साध्वी तम ग्निमनुवेक्ष्यति। Translation: While outside observing her husband, who will burn in the fire of mystic power along with his thatched cottage, his chaste wife will enter the fire with rapt attention. Purport: Gandhari was an ideal chaste lady, a life companion of her husband, and therefore when she saw her husband burning in the fire of mystic yoga along with his cottage of leaves, she despaired. She left home after losing her 100 sons, and in the forest she saw that her most beloved husband was also burning. Now she actually felt alone, and therefore she entered the fire of her husband and followed her husband to death. This entering of a chaste lady into the fire of her dead husband is called the sati rite, and the action is considered to be most perfect for a woman. In a later age, this sati rite became an obnoxious criminal affair, because the ceremony was forced upon even an unwilling woman. In this fallen age, it is not possible for any lady to follow the sati rite as chastely as it was done by Gandhari and others in past ages. A chaste wife like Gandhari would feel the separation of her husband to be more burning than actual fire. Such a lady can observe the sati rite voluntarily, and there is no criminal force by anyone. When the rite became a formality only and force was applied upon a lady to follow the principle, actually it became criminal, and therefore the ceremony was to be stopped by state law. This prophecy of Narad Muni to Maharaj Yudhishthir forbade him to go to his widowed aunt. So ये सती का बता रहे हैं प्रभुपाद, किस तरह से सती जो है, जो प्रथा है, जो बाद में कुप्रथा बन गई, पर उसका जो बेसिस है वो यही है कि एक जो चेस्ट वाइफ है, वो एक अपने हस्बैंड से जो विरह है, उसकी अग्नि को और एक्चुअल अग्नि से ज्यादा भीष्म मानती है। और
हाँ, और जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि इन दिस फॉलन एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी, और आजकल माहौल भी ऐसा है, लाइक माय मदर लॉस्ट, आई लॉस्ट माय फादर, और you know, my mother was in constant state of you can say uh, uh, of sadness, engulfing her whole life, कि पति चले गए जिनकी मैं सारी सेवा करती थी. और most of the people who come, because people have no culture, they are encouraging her, आप बाहर जाना शुरू करिए, आप घूमना शुरू करिए, आप तैयार होइए, आप कहीं इधर जाना शुरू करिए ताकि आपका मन वहां से जाए. तो जो संसार है, हाँ, वो भी ऐसा है, हाँ, कि वो आपको उल्टा एनकरेज करता है. आई वाज स्पीकिंग विद महाराज एंड आई वाज टेलिंग हर व्हाट इज हैपनिंग एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड कि दैट एवरीबडी इज एनकरेजिंग माय मदर नॉट टू फील बैड, जस्ट टू गो आउट, मार्केट जाइए, आप थोड़ा सा बाहर मंदिर जाइए, कहीं योगा जाइए, आपका ध्यान बटेगा और इस विरह से निकलिए. So rather than appreciating, they just feel somebody is in depression, और उसका तरीका है बाहर निकलने का कि आप घूमिए फिरिए और मौज करिए, like this. So this is the Kali Yuga where everything is ulta, like this. So okay, so we are just, what is time? 14 minutes. अगला श्लोक देखना मुझे कितना लंबा है, just let's see, क्योंकि let's complete this chapter. Let's read it, Prabhuji. Go ahead. Anybody else wants to read? Hare Krishna. Okay. Vrindavan Prabhu, you would like to read? Yes, Prabhuji. Go ahead, Prabhuji. Vidurastu tadascharyan nishamya kuru nandan harshashoka yutas tasmad gantatirtha nishevakaha. Translation. Vidur, being affected with delight and grief, will then leave that place of sacred pilgrimage. Purport. Vidur was astonished to see the marvelous departure of his brother Dhritarashtra as a liberated yogi, for in his past life he was much attached to materialism. Of course, it was only due to Vidur that his brother attained the desirable goal of life. Vidur was therefore glad to learn about it, but he was sorry that he could not make his brother turn into a pure devotee. This was not done by Vidur because of Dhritarashtra being inimical to the Pandavas, who were all devotees of the Lord. An offense at the feet of a Vaishnava is more dangerous than an offense at the lotus feet of the Lord. Vidur was certainly very liberal to bestow mercy upon his brother Dhritarashtra, whose past life was very materialistic. But ultimately, the result of such mercy certainly depended on the will of the Supreme Lord in the present life. Therefore, Dhritarashtra attained liberation only, and after many such liberated states of life, one can attain to the stage of devotional service. Vidur was certainly very mortified by the death of his brother and sister-in-law, and the only remedy to mitigate such lamentation was to go out to pilgrimage. Thus, Maharaj Yudhishthira had no chance to call back Vidur, his surviving uncle. You're on mute. So he was happy and at the same time sad. हर्ष शोका जुतस तस्माद. तो हैप्पी इसलिए कि वो एक योगी को जो समाधि की स्टेज पे आके उन्होंने एक शरीर छोड़ दिया, और शोक इसलिए कि उनको एक भक्त नहीं बना पाए, कि उनको तो इसलिए उनको हर्ष भी है और शोक भी है, दोनों चीजें हैं. और वो क्यों नहीं बना पाए इतना सब, जबकि वो तो स्वयं महाजन है. विदुर इज नन अदर देन यमराज. सो क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि ही हैड ऑफेंडेड द पांडवास. तो एक वैष्णव के पे किया गया अपराध, वो कह रहे हैं कि भगवान पे किया गया अपराध से भी ज्यादा है. इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भक्तों के प्रति कुभावना नहीं रखनी चाहिए. और
नहीं तो देखिए एक महाजन भी उनकी कृपा, वो चाहते भी थे कि धृतराष्ट्र पे कृपा करें, हाँ, ही फेल्ट एज ए ड्यूटी ऑल्सो, और उन्होंने पूरा प्रयत्न भी किया, पर तब भी हाँ उनको दंड मिला, इस चीज का फल मिला कि जो वैष्णव हैं, जो पांडव हैं, उनके प्रति किए हुए जो उन्होंने इतने उनके ऊपर जुल्म किए, उसका उनको फल मिला कि उनको भक्ति का अंत नहीं मिला. ओके प्रभु जी, let's quickly go to the last one, then chapter can finish. Yes, Prabhu. इति उक्तवाथारुहत् इति उक्ता इति One second. ये पढ़ना चाहता था वेदांश, इसने हाथ खड़ा किया था. पढ़ लो, ये बड़ी जल्दी नाराज हो जाता. मैंने बाद में देखा इसका हाथ. ओहो, सॉरी. अच्छा, ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए बात. अच्छा कोई बात, हमसे गलती हो गई, कल से ध्यान से रखेंगे. यस वृंदावन फ्रॉम द प्रभु. I was muted. इति उक्त्वा स्वर्गं नारदा तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाच्छुचा. Translation. Having spoken thus, the great sage Narad, along with his Veena, ascended into outer space. Yudhishthira kept his instruction in his heart and so was able to get rid of all lamentations. Purport. Sri Narad Ji is an eternal spaceman, having been endowed with a spiritual body by the grace of the Lord. He can travel in the outer spaces of both the material and spiritual worlds without restriction and can approach any planet in unlimited space within no time. We have already discussed his previous life as the son of a maidservant. Because of his association with pure devotees, he was elevated to the position of an eternal spaceman and thus had freedom of movement. One should therefore try to follow in the footsteps of Narad Muni and not make a futile effort to reach other planets by mechanical means. Maharaj Yudhishthira was a pious king and therefore he could see Narad Muni occasionally. Anyone who desires to see Narad Muni must first be pious and follow in the footsteps of Narad Muni. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 13th chapter. तो एक करके सब चले गए, और जैसे विदुर ने, नारद जी ने बताया कि ना विदुर को लेने जा सकते हो, ना गांधारी को, और धृतराष्ट्र भी जो है प्राण त्याग देंगे 5 दिन के बाद. तो इस तरह से उन्होंने उनको सांत्वना दी, और जैसे ऊपर लिखा है कि युधिष्ठिर kept his instructions in his heart and so was able to get rid of all limitation. So जब भी हमारे मन में कष्ट आता है, किसी दुख आता है, तो अगर हम अपने गुरु की, शास्त्रों की, आचार्यों की वाणी को अपने हृदय में रखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे दुख से निवारण मिल सकता है. तो इसीलिए हर एक जगह के ऊपर आप पाएंगे कि साधु संग लव मात्र, कि आप हर एक चीज में जो है हमारे जीवन में हमें हमेशा भक्तों की कृपा देखनी चाहिए और कृपा मांगनी चाहिए और हमेशा निम्न रहना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो दूसरा वैष्णव है वो सोचे कि हाँ ये कृपा का पात्र है, इसको कृपा चाहिए. पर अगर हम प्राउड बनेंगे या बोलेंगे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर जो दूसरा वैष्णव है वो आपसे कृपा मांगेगा. तो अभी हमारे ऊपर है कि हम कृपा देना चाहते हैं कि कृपा लेना चाहते हैं. तो कृपा लेना अच्छा है, विनम्र होना अच्छा है, और लाइक दिस. सो आज जो है चैप्टर समाप्त हुआ, एंड टुमारो a difficult chapter will start, that how Krishna, the disappearance of Lord Krishna, we will hear tomorrow. Okay, so thank you so much for joining and restarting these classes. So we'll end the session now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Ananta Koti Vaishnavinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. Dhanvat Pranam. Jai Jagannath. Hare Krishna.